we have the director himself. Well, he's done three, and tell us, how was the experience shooting for this web series? Um, you know, first of all, when I got to get the script in work from Dr. Jagdish, one thing which I told that it's too technical. Right. Okay, but then as we worked on the script together, and as we get to know the work of Dr. Sharan, so this script is something which was required, which was needed, that was important for us to propagate the work that's done by Dr. Sharan. So we fictionalized the script a bit, and at the end it's a teamwork. Our director is as good as its actor and the crew. So hats off to all of you. Thank you so much. Thank you. The film, the web series is looking good. Thank you. बट ऑनेस्टली जब मैंने भी स्क्रिप्ट देखी थी मुझे लगा ये इतने मुश्किल शब्द कैसे बोले जाएंगे. सो इट वाज अ टास्क, बट थैंक्स टू यू, यू नो, it's come out really well. So what do you see, you know, what is the most important, like what was your most favorite scene or most favorite moment of the web series? My most favorite scene is actually in the episode 3 at the end, when you come to Ankita. Yes! And you come in and say, I will show you around. And the kind of music that we have placed there, it's coming out very good. I Great. like that one. And another one with Mickey sir. When Mickey sir, I'm not going to reveal their story, but at one point of time, I suppose in episode 3 or 4, when Dr. Jagdish is caught looking at Mickey sir, his character. Again, that part, it looks very good on the... Great. So thank you. And anything else you want to share about the web series? What should people look for in the web series? The web series is very informational. So after going through the web series, one must visit the website of PRS Neuroscience and get to understand the good work that's been done by Dr. Sharan and team. Yeah. Thank you, Abhinav. Thank you so much. Well, now we come to the man himself, Dr. Jagdish. I've been saying this again and again क्योंकि ये राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही साथ ये स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, और जो कि एकदम वर्ल्ड फेमस है. मतलब आप ही सब कर लोगे तो हम क्या करेंगे? अब नाम जगदीश रखा है तो मतलब Good one. He's always on fire. Well, so Dr. Jagdish, you have played Dr. Sharan in the show, right? So first of all, tell me, how easy or difficult was it to do that? नहीं, देखो ऐसा है, मैं कभी न्यूरो सर्जरी कर नहीं पाया. मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं थी. हालांकि पढ़ाई करनी मुझे बहुत पसंद थी. इतनी पढ़ाई पसंद थी कि कुछ सब्जेक्ट मैंने काफ़ी साल तक किए, लेकिन न्यूरो सर्जन कभी नहीं बन पाया. लेकिन डॉक्टर शरण का रोल करते करते मुझे एक तरह से न्यूरो सर्जरी का जो रोल का जो फीलिंग होता है वो आ गया. और उसके बाद मैं हाथ भी जोड़ता हूँ कि अच्छा है कि मैं ENT कर रहा हूँ क्योंकि इतना हाई प्रेशर और इंटेंस फील्ड है न्यूरो सर्जरी, जो खासकर ब्रेन की सर्जरीज होती हैं, स्पाइन की सर्जरीज होती हैं. ये इंसान की लाइफ और डेथ को चेंज करने वाली जो सर्जरीज होती हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरे लिए तो एक तरह से एक ड्रीम की न्यूरो सर्जन कैसे होते हैं. लेकिन आई एम हैप्पी विद बीइंग द प्लम्बर ऑफ द नोज, तो वही कर रहा हूँ आजकल. Fantastic. So tell me something. प्लम्बर ऑफ द लीकिंग नोज. प्लम्बर ऑफ द लीकिंग नोज. Nose, ears, eyes, सब कुछ है. But anyway, so moving on, you know, you were telling me a story कि where you know, you went to Dr. Sharan and you know, you've also done season 1 for Yes, this. yes. So why don't you tell people season 1 और season 2 में क्या फर्क है? बिल्कुल. देखिए, मेन पर्पस स्टार्टिंग ट्रबल्स जो नाम है वो उसका बेसिकली 2 मीनिंग है. एक तो जब आप कुछ नया शुरू करते हो तो आपको स्टार्टिंग में ट्रबल्स होती हैं, और दूसरा जब आप कब नया कुछ शुरू करते हो तो आपके आसपास ट्रबल स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जेलसी होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है. तो स्टार्टिंग ट्रबल्स उस पे एक वर्ड प्ले है. हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि डॉक्टर्स की असली स्टोरीज कभी आती नहीं है मीडिया में या मूवीज में. अगर आप देखेंगे डॉक्टर यही बोल रहा होता है कि हालत बहुत गंभीर है, माँ को बचा लो, बेटे को बचा लो. फिर उनके एक्सपेक्टेशन भी ये होते हैं, फिर मैंने इंजेक्शन दे दिया है, और फिर पेशेंट्स और पेशेंट्स वो एक्सपेक्टेशन लेके हॉस्पिटल आते हैं, फिर हमें मारते हैं. फिर तो हमें लगा कि यार जो डॉक्टर्स की असली एक्चुअल चीज़ है, आप फॉरेन के सारे शोज देखते हो, हाउस MD देखते हो, गुड डॉक्टर देखते हो, लेकिन इंडिया में हमारी जो मेडिकल फील्ड है उसको राइट प्लेटफॉर्म और राइट ऑथेंटिसिटी से क्यों नहीं दिखाया जाता. तो हम कुछ डॉक्टर्स ने थोड़े से अपने खुद के पैसे डाल के सीजन 1 बनाया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि डॉक्टर की स्टोरी, उसमें मेरी स्टोरी थी क्योंकि हम लोगों ने मैंने इन्वेंशंस भी बनाए हैं, तो उस पर किताब थी, तो उसके बेसिस पे हमने किया था. लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अगर आप सोच सकते हो, अगर 10 लाख डॉक्टर्स इंडिया में हैं तो हमारी सीरीज़ पे ओवर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं. तो आप ये सोच सकते हो कि नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड मेडिकल स्टोरी, जो ऑथेंटिक इंडियन स्टोरी है, उसकी क्या वैल्यू है. तो हमें लगा कि यार बहुत लोग बोल रहे थे सीजन 2 बनाओ, सीजन 2 बनाओ, और हमें लगा कि हमें एक ही आदमी की स्टोरी नहीं बनानी चाहिए. लोगों को पता होना चाहिए अलग अलग फील्ड के अलग अलग डॉक्टर्स जो आविष्कार करते हैं, जो इनोवेशन करते हैं,
उनके ऊपर बनानी चाहिए। और जब डॉक्टर शरण से मिला मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी सर्जरी करते हैं जो जैसे हाथ अगर काँप रहा हो और उसी समय ब्रेन की सर्जरी करके हाथ कांपना बंद हो जाता है। हमारे देश में कितने लोगों को पार्किंसंस की डिसीज है, हाथ कांप रहे होते हैं, ये कांप रहे, कोई इलाज ही नहीं कराता है, सब सफ़र कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये 5 मिनट की सर्जरी में ठीक हो सकता है ऑन द टेबल। तो हमें लगा ये स्टोरी हमें दिखानी चाहिए, तो हमने सर से बात की, सर ने हमें परमिशन दिया कि हाँ आप हमारी स्टोरी बता सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक और टेक्निकल होना चाहिए। इसको आप प्लीज़ इतना डम डाउन मत कीजिए कि ये असली लोगों को असलियत समझ में नहीं आए। इसलिए जैसे अभिनव बोले थे टेक्निकल है, बट ये टेक्निकलिटी ज़रूरी है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि लोग इसको कैसे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। सो गाइज, इन्होंने तो बहुत मॉडेस्टली अपनी बुक का नाम नहीं बताया, लेट मी टेल यू, इट्स कॉल्ड इन्वेंटिंग मेडिकल डिवाइसेस अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया, एंड सीजन 1 जो है इसका, दैट हैज बीन टेलीकास्टेड ऑन Amazon Prime UK, Amazon Prime US, and इंडिया में एपिकॉन पे है, Epicon पे और भी। यूट्यूब पे बड़ी बिट्स में। Fantastic. So that's definitely a lot of reach. So you know, I know you're kind of the maker of this whole thing, you know. But now tell me, what was your favorite part? पूरी इस वेब सीरीज में आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था? सो एज अ राइटर मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था कि जो लास्ट में ट्विस्ट डाला है, वो मैंने कम से कम 20 एकता कपूर की सीरियल देख के सोच के वो बनाया था। और दूसरा जो मुझे इसमें एक्टिंग में जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि जो मेरा और एक बनवारी लाल कैरेक्टर के साथ जो थोड़ी सी हमारी जो रैपो है कॉमेडी वाली, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो एक सीनियर और जूनियर का जो रैपो होता है वो काफ़ी रिलेटेबल होता है, और मुझे अच्छा लगा वो वाले सीन्स करके। So ये वेब सीरीज क्यों देखनी चाहिए? Why? ये वेब सीरीज 2 रीजंस की वजह से देखनी चाहिए। एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे इंडियन डॉक्टर्स क्या करते हैं, किस तरह की इनकी पढ़ाई होती है, किस तरह से इनका काम होता है, और दूसरा रीज़न ये है कि आपको इससे कितना फ़ायदा हो सकता है अगर आप समझें आपकी बीमारियों को कैसे इलाज दिया जा सकता है, खासकर इस तरह की डेबिलिटेटिंग डिसीजेस। तो हम लोग इसको इन्फोटेनमेंट की तरह बोल रहे हैं, जहाँ पर आपको एक्चुअल नॉलेज भी मिलेगी, लेकिन ये आपको एंटरटेनमेंट के साथ फ्लेवर और मसाले के साथ मिलेगी। तो इसीलिए हम इस जॉनर को प्रोपेगेट करना चाहते हैं, और आपको इस वजह से देखनी चाहिए। Fantastic. Thank you so much. Thank And you. just the last question for you. Season 3, Season 4, Season 5, how many more coming? जितना पैसा आएगा उतने सीजन बनेंगे। Fantastic. Thank you so much. Well, of course, sir को तो मतलब he needs no introduction. Starting from Chashme Badur to Starting Trouble Season 2. Sir, how was your experience shooting for this? वेल सबसे पहले तो ये बताऊं कि जब मुझे पहली बार फ़ोन आया, मैसेज आया, तो मुझे समझ नहीं आई कि है क्या चीज़। कि ये एंटरटेनमेंट के उसमें रियल में है, या ये इन्फोटेनमेंट के रियल में है, या सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही है, या ये मेडिकल कुछ हम करने जा रहे हैं, या ये कहाँ रिलीज़ होगी, ये कैसे होगा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे एक बात जो समझ में आ चुकी थी वो ये थी कि ये कुछ मेडिकल डॉक्टर्स मिलकर अपनी कहानी कुछ आगे दुनिया को बताना चाहते हैं। और जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा इनके बारे में, डॉक्टर शरण के बारे में जाना, इनसे जाना, कुछ और लोगों से जाना, तो और फिर जब मैं जाके इनको मिला, पर्सनली जाके मिला, तो आई वॉज टोटली फ्लोर्ड बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क ही डज, द काइंड ऑफ देखिए सर्जरी करने वाले डॉक्टर तो बहुत सारे हैं जो मैंने देखा, हर फील्ड में हर तरह की सर्जरी करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो पेशेंट का फॉलोअप है उसको गरीब से गरीब आदमी को हेल्प कर कर, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर कर, जो इसका जो मेन पर्पस है इस फिल्म, इस सीरीज का, वो सर्जरी दिखाना नहीं, वो ये है कि पेशेंट जब कोई भी एक मेंटल पेशेंट, न्यूरो पेशेंट जब ठीक हो जाता है, ठीक होके वो घर चला जाता है, उसके बाद उसकी क्या फॉलोअप है, उसकी लाइफ कैसी, उसके बाद कैसी है, उसको असली केयर तब चाहिए। वो जो ऑपरेशन है वो तो हो गया, 1 घंटे में हो गया, 2 घंटे में हो गया, जो भी उसका टाइम फ्रेम है उसमें हो गया, लेकिन जो बाकी उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ी है सालों साल, उसकी केयर का क्या होगा, तो वो इनका ज़्यादा फोकस है ये दिखाने में। So of course that we'll speak to Dr. Sharan about. It's called the rehabilitation, if I'm Yeah, not wrong. exactly. The rehab center. They have their own rehab center now in Bangalore. Yeah. So we will talk about it. So sir, what is your favorite part in the whole series? देखो, मैं तो एक बात मानता हूँ कि मैं, अगर आप मुझसे पूछो, जैसे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट रोल, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा ये फेवरेट रोल है, वही कर रहा हूँ। तो मेरा फेवरेट पार्ट तो सब कुछ ही फेवरेट है, मैं कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मैं हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। द मोमेंट विच आई एम परफॉर्मिंग, दैट शुड बी एंजॉयबल फॉर मी। Absolutely. अगर मैं उसको एंजॉय करूँगा तब वो कहीं ना कहीं कन्वे होगी, कैसी भी मोमेंट हो, भले वो कॉमिक हो या जेलसी की हो, या जो भी इमोशन उसमें जनरेट किया जा रहा है उस मोमेंट में, वो जनरेट पहले होगा तो पहले मुझ तक आए, फिर वो जाएगा। Absolutely. सर अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए. Of
कोर्स प्रोमो में तो है जो हमें समझ आया, बट थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। ये इसमें ऐसा है कि आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, जैसे ये तो एकदम नेगेटिव है, इसमें कोई हाँ, एकदम ये चेहरा इनका, कलर इनका चेहरे का वाइट है लेकिन है ये ब्लैक। तो लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, तो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ और मैं इनकी सारी चालें जो हैं आई कैन सी थ्रू हिम कि ये किस तरह से डॉक्टर शरण को जो उनकी लाइफ में जो हुआ है, एक्चुअली हुआ उनके साथ, ये जो कहानी है रियल है, तो कैसे इस कैरेक्टर ने उनको नीचे लाने की कोशिश की और कैसे मेरे कैरेक्टर ने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की ताकि वो आगे बढ़ें। करेक्ट। और कैसे एक लेवल पे मतलब ऑलमोस्ट हमारा एक फेस टू फेस तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी ऐसा हो जाता है कि भैया ये आप गलत कर रहे हैं और ये ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन ये एक दो फोर्सेस हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जो कि एक आप समझिए कि हर चीज़ को ऊपर लाने के लिए एक नेगेटिव फोर्स भी चाहिए होती है, उसको फाइट करने के लिए पॉजिटिव। राम और अमन की कहानी है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। इतने डॉक्टर्स, मतलब इतनी बार आप डॉक्टर्स बन चुके हैं, मुझे लगता है आपको तो अब डिग्री मतलब मिल ही चुकी होगी। डिग्री है इनके पास, है ना? दिस इज फिल्म डिग्री ऑफ डॉक्टरेट। एक्चुअली बहुत बार रील डॉक्टर बना हूँ, इस बार रियल डॉक्टर प्ले करना था। तो काफ़ी टेक्निकल स्क्रिप्ट थी, तो पहले तो मैंने ना कर दी, मैंने बोला आई एम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, ये मैं नहीं करता। फिर हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने 1 घंटे की वीडियो कॉल में मुझे समझा दिया, ट्रैफिक में बैठे थे बैंगलोर में, बोला चलो करते हैं यार, ये अगर इसे इतनी कॉन्फिडेंस है मेरी एबिलिटी में तो मैं कौन होगा ना। करेक्ट। तो मैंने हाँ, फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे पता चला कि यार ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है, तो एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रियल लाइफ तो कंफर्टेबली हो ही जाता है, यू डोंट नीड एक्टिंग टैलेंट, जस्ट प्ले योर नॉर्मल लाइफ एंड यू विल कम अक्रॉस एज इविल एज पॉसिबल। बट ओके, टॉकिंग अबाउट इविल, लाइक आई हैव हर्ड, जिन्होंने भी अभी तक देखी है वो लोग भी ये बोलते हैं कि यार ये तो बहुत गलत है, यू नो, वी रियली वांट टू किल दिस मैन, एज आई वाज सेइंग वी लव टू हेट यू। सो यू नो, हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट? See, I'll tell you, इसमें the easy part was that you don't have to look evil. वो faces वैसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं evil हूँ. The script had it all there, and of course the director gave you the instructions, and the actor's job is totally done. All you have to do is follow the script. You become evil, you become whatever they want you to be. Correct. And that's what happened. Correct. So your favorite memory from the shoot? Let's not talk about the series, but from the shoot, क्योंकि हम लोगों ने बैंगलोर में शूट किया, out of मुंबई शूट किया. Any favorite memory that you want to share? Yeah, well, the favorite memory that comes to mind, which people hope they never have to encounter in real life, is that I got caught with another woman. हैं? ये कब हुआ? देखो, exact episode पता चलेगा. You need to watch the series. Well, we have launched it today. You can always go and stream and watch us. And now, thank you, actors and director. But Ankit, what about you? Oh, We yes. forgot about you. So, how was your experience? Tell अपना तो me. बताओ कुछ। यार honestly मुझे तो ऐसे फोन आया कि there is a character, you have to play a patient. I said yeah okay. और जब मैंने first time walk किया उसमें, क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लिखा नहीं था कि वो पेशेंट है. He was a regular guy जो कि रिसेप्शन पे काम करता है. तो मैंने अपने डोले वोले ऐसे ऊपर किए और मैं अपना हीरो की तरह चल के गया. They were like, ब्रो ये मॉडल वॉक नहीं चाहिए, पेशेंट है तू, लेट्स शो यू द वीडियो. फिर उन्होंने मुझे जब वीडियो दिखाई तो जो पेशेंट मैंने प्ले किया है उसका एक्चुअली जो हेड है वो पूरा 360 डिग्री पीछे गिर चुका है. ही कांट इवन पुट हिज हेड अप विदाउट सपोर्ट. ही हैज़ अ लॉट ऑफ वॉबलिंग्स इन हिज हैंड एंड द बॉडी, और वो कुछ भी काम नहीं कर सकता. एंड आई हैड टू प्ले दैट पेशेंट. और मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये दिया गया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू वो पेशेंट है जब तक वो एक्चुअली होता नहीं है. So I think that was the beauty, and thanks to our director and of course Dr. Jagdish and Dr. Sharan and Dr. Pratibha ki they made me take up those nuances. और जो words मैंने use किए हैं मतलब thank you, हम सब ने actually मतलब सपने में भी मुझे रात को स्क्रिप्ट में वही words घूम रहे थे. So but I think it was a great experience. I really had fun shooting for this. But I have to say, at this point, when I saw all the 6 episodes, I felt he needed to join Anupam Kher's, actor prepared. And I said, how did they cast this guy? And I realized he's a patiently acting कर रहे हैं. मतलब इससे ज़्यादा क्या लिखते हैं ना? ये कमाल कर दिया इसने. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Now we will meet the actual doctors, Dr. Sharan and Dr. Pratibha.
I play a lawyer called Ishwar, which is an oxymoron in itself, because Ishwar is as vindictive as he can be, and his only aim is to make sure that no money is spent. And I have a great scene with Jagdish, and I was channelizing all the lawyers I've seen so far, and it was a great experience because Dr. Sharan was watching all of us, he was giving us cues, he was making sure that whatever cues he was giving, we were doing it. But when you're playing a lawyer in a courtroom drama, you can take it any way you want. It's basically performance. Correct. And I think a lot of people came and thought that I was a real lawyer. Wow. I don't know whether that's a compliment or not, but I took it. Yeah. As long as you took it, that's great. Yeah. So let's talk to both of them because इन्हीं पे कहानी ये based है. PRS Neurosciences is their baby. The rehabilitation is their baby. So Dr. Sharan, of course we know there are a lot of struggles that we have shown in the whole series. पहले तो बताओ इसमें मसाला कितना है और सच्चाई कितनी है? That's a tricky question. Yeah, but we want people to know. Truthfully, I think 85% is true. 85% is true. 15% is not. Why don't you tell us about the whole, PRS Neurosciences, neurologics as they call it? So, see, you have things like kidney function test, heart function test, liver function test, a brain function test नहीं. So, such में अभी patient का brain कुछ problem हुआ तो we don't know how what is malfunctioning. अभी ये phone ले लीजिए, for example. You take this phone, smartphone, and this crashes. And you go to the engineer and you ask, has he backed up your data? No backup, finish. Now backed up data from the brain hasn't happened. None of us have backed up our data. That's the most important thing. So stroke hua, head injury hua, patient have lost their memory, lost their speech. Kaisa karna? In fact, one of my patients is here from Mumbai. Her name is Bedi. You can see her later. It's a coma to college story. A girl who had a head injury, वो coma में था 4-5 महीने. अभी she's back to college. छोटा मोटा प्रॉब्लम अभी तो है, but she's back to college. She got 75% marks in the exams. Wow. It's just fantastic. So that's how it is. So Neurologics is our own software that we have got a patent. We even applied for an American patent, where we have mapped these functional brain circuits so that we can understand which part is malfunctioning and how to make it better. Fantastic. Dr. Pratibha, do you want to add to this? Yeah, I think the fundamental thing of trying to do this whole thing is to reach out to people who need our help. There are so many people who come to me and they say, why didn't we know about this before? I mean, why didn't anybody tell, or why don't you market yourself? Why don't you advertise yourself? I mean, we don't know where to advertise, we don't know how to market, but then I think some way to reach out to people that such people, neurologically disabled people, can be helped and they can go back to probably a decent life to lead forward, because these people are youngsters most of the time, especially head injuries, 25, 30. Yeah. I mean, the rest of the life, they are unproductive. I can't call it a burden, but then really it is a burden to the parents. And sometimes the parents or the family life is completely disrupted, whether it is the spouse or the child or whoever it is. So, and society, obviously, he can't be a productive citizen any which way, right? If we can make these people at least to take care of themselves and be a little more productive, I think that's huge contribution. Fantastic. That we can make. So this is a small venture of trying to reach out to such people. Beautiful. So if people watch this and they get this, they can spread the information. Maybe all patients will not watch. Patients are all in the villages also, not necessarily in urban cities. But if somebody can pass this word and say there is a place like this, we can help them, I think we've served. Great. So the last question for today, I'll ask both of them actually. So series, huh? So what should we watch the series for? And how? Listen, you're a doctor, but making a series, like giving out your life to make a series, what was the experience? So, I mean, I did give out my life story, but the goal is not to show what I did. Somebody had to give a message. So we wanted to show people that the brain is so important, yet the most neglected organ in everybody's field. Correct. Very little is known about it, but yet it's the most important organ for functioning day to day. And those who get disabled, you don't have to lose hope. There is hope.
Like that guitar guy. Yeah. You know, he was crying because he couldn't move these 3 fingers of guitar. The moment I burnt his circuit, it opened up and he's so happy. So that kind of joy that you give, you see in the families and the patients' face, no money can buy. It's like a nasha for us. Yes. So we want to help as many people as possible and make this world less disabled. And if for that reason, if you can help us to reach out to those strokes and head injuries, spinal cord problems, Parkinson's patients, and guide them to, can I solve everybody's problem? No. Can we make everything 100% normal? No, that's impossible. But we can do our best to make a difference and make this world a better place for everybody. Fantastic. So less disabled India and the world is what we're looking at. So guys, you need to go and check us out. We are called स्टार्टिंग ट्रबल्स टू भेजा Bheja Unfry. Unfry. और ये PRS न्यूरोसाइंसेस के YouTube चैनल पे अभी लाइव हो जाएगा 7 o'clock को. But after that it will also be available on other OTT platforms over the next few months. Can I call my patient? yeah, you can. I want you to see the patient. Vidhi, तो I ये जो want you to पेशेंट है see- ये कोमा में थी और कोमा से अभी आप जो उनको देखोगे वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है. ये बोन निकाला था, पेट में रखा था, उसको 3-4 महीने ब्रेन बहुत चोट लगा था, 2-wheeler एक्सीडेंट, पिलियन राइडर. आ जाओ, Come. यहाँ बैठ जाओ. आ जाओ. So she is from Mumbai. She came to Bangalore in summer holidays or whatever Christmas holidays to spend some time. December it was. Summer. And then she was going somewhere as a pillion of a 2-wheeler with her cousin and the accident happened. And she was in coma for 4 months. She was in hospital for 6-7 months. So from there she's back to college. So it's a coma to college story. She still is fighting some battles, but she's happy. She's back to TikTok. You want to say something? You can say something. My all thanks also Sunshine I'm here because of them. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So guys, as I said, please watch out PRS Life Sciences YouTube channel. Neurosciences YouTube channel, and also on all other OTT platforms very soon, 7 p.m. sharp. Thank you. Thank you for her joining real us. story is there in that. Yeah, her in the real story is BTS. there in the BTS of one. I was completely better than and they had me to stand up and do all my work. Great. Back to TikTok and college. Yeah, thank you. Congratulations. Thank you, Team Media. Thank you so much. Thank you so much, all Thank of you. you. Okay, Please help so- us to spread this In a message. mad world, only the mad are sane. This goes to what we all are now. Very Jahez, yeah, do you want to take a bite? Come. Oh, hi. Finally. Ajay. Come. Come in. Yeah, come. This No, way, this come way. from here. Come. This way. This is one of our patients from Mumbai. Come, Mama. I'm sorry. Come, let's do the questions first. How are you? Okay, so that's our very beloved Jaya Bhattacharya. She's also playing a very important part in this series. So, quick questions to you. Doctor, tell us about your character first. Doctor है, positive doctor है, negative doctor है. What is this? हम क्या करें, हमारा जो पर्सनालिटी है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मली people do not cast me as a positive character. So yes, I will be one of the rodas in the lives, in the achievements of the two darling doctors, and that's about it. So one more negative for me. Great. But tell me, was it very technical or was it like something that you've always been doing? This time it was not a technical thing because it was just the introduction of the main antagonist, and later on there is much more to. Next set. Yeah. Much The next more set to is cooking up. Great. So there's lots coming up. What was your favorite part? That will be the last question for you. Oh, lovely! I was scolding my husband. Real husband. Don't. So who is playing your बस husband? इतना ही है. So who is playing your husband? Mr. Mickey Makijan, Oh. a very senior actor, और मतलब it was like मैं इनको डांट रही हूँ कि ठीक है चलो. Don't. Great. Thank you so much. Thank you for joining us. Thank you everyone. Now we can head to high tea and some snacks. Thank you. Thank you. Some pictures with her. Oh, lovely. Thank you, ma'am, for coming.
Thank you. Just Rakesh ji is right. The one. आगे सर how are you? Visuals थोड़े से. या एक पिक्चर ले लो सर. एक मिनट. नीलेश भाई. शेयर हटा दो ना. Yes, so yeah, everyone in the center. Ma'am over here. So in my camera here. Everybody in the camera. Ah, hi. Well, that is. Hi, how are you doing? Yes, doctor. Yes. इधर आ जाओ. इस तरफ. Hi, Siri. इस तरफ आ जाओ. इस तरफ. हाँ. बोला. Where is Mama? Sir, everyone here in the picture, please. All are in frame, right? Yeah. थोड़ा पीछे. Let's just get the picture. नहीं तो फिर टेढ़े मेढ़े आएंगे. So yeah, everyone. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. All right.